पीछे पीछे पीछे, अरे खड़े रहो, अरे रहो यार, इधर ही मत जाओ यार। दादा दादा पीछे आओ ना, पीछे आओ ना, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ मैम। ए हटा, तेरा हटा, जाओ, गाड़ी हट रहा है, 1 मिनट। स्टार्ट, आप रेडी हो? ठीक है ठीक है। सो मेरी क्रिसमस गाइस, पहले तो सबको, आप लोग सबको, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट एट योडा। My name is Meetu Paul and I'm the brand head of Drools Pet Food Limited. Drools is into pet nutrition for the last 10 years and we believe that we together have to coexist on this Mother Earth. And as humans who occupy such a beautiful time and space, it's our job and responsibility to look after community animals also, and that would mean dogs, cats, and many other species. And we have been doing this month on month, and every month we try and associate with one of our brand ambassadors जो हमारे साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग को आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। For this beautiful Christmas project, we have decided to have Ananya Panday with us. Ananya, of course, has been ruling hearts since 2019 when she came in with Student of the Year Part 2. Of course, I don't need to say much about her performances. I loved what you did in Gehraiya. I absolutely loved it. But more than her being one of the very important, influential people for the youth, what has aligned Ananya and Drools together is her love for dogs and cats. Ananya herself is a pet mom to Astro and Fudge. So she understands pet nutrition very deeply, and that is the reason why we have Ananya with us. Also partnering with this beautiful event today is Just Dogs, which is one of our premium retail. Just Dogs also, of course, I'll request Kashyap to say a lot about Just Dogs, but I'll just introduce Kashyap, who is head of marketing for Just Dogs, and we have Meedha with us from Yoda. Milan with us from Yoda. Milan. Okay. And Kashyap, can I just have 1 or 2 bites from you? Sure. So, very beautifully said by Meetu ma'am that coexistence is not a choice, but it's must. So, in small little ways that we can do things for pets and animals around us. You may not want to go out and do big things, but say if it is hot for you outside, if it is raining for you outside, it is hot for pets as well, and it is raining for pets as well. So you may just want to find that jute sack just there around your house and put it outside your house. Put a little bowl of water in your balcony or outside your house for birds and animals, to drink water from them. So the idea is to do these small little things of kindness to make this world a better place. Just Dogs in this journey of making this world better place for pets is doing 2 roles. One is that of an enabler, where through such events with kind partners like Drools, we are inviting people to join in the drive where we make things happen. And another is provider. So there are things like road accidents that happen at night, and more often than not, it is not the driver probably who is driving recklessly, but the pet is, or the dog or animal is not visible. So what we do is we tie reflective collars around the neck of pets, and in such instances we become provider also. So if you walk into Just Dogs store, you may ask our people there at store that if you have reflective collars, I have a dog in my community, in my society, so we would love to do that. We do this activity of Raksha drive, wherein we tie reflective collars around the necks of dogs and street pets.
So this platform is there to inaugurate the larger drive that we are doing in 5 cities of India: Ahmedabad, Pune, Mumbai, Bangalore, and Delhi. These 5 cities we are doing, we can be enabler only to certain extent, but we at our homes can do innumerable things, and only sky is the limit of the good things that we can do. Thank you. Ananya, can we please have some kind words from you? You want to say something first? No, that's okay. Okay. Hello everyone, Merry Christmas. I'm very grateful and happy कि मैं Drools के साथ associated हूँ. I'm a pet mom, as you said. I know I'm very young to be called a mom, but I have 2 dogs and they're my life. They're my family. And Drools focuses so much on wholesome nutrition and happy and long lives of pets. And you all feed the largest number of pets in Of course, India. yes, more than 4 lakh pets. Yeah, so I think as someone who has dogs and any sort of pets, I understand how important it is to keep their nutrition in mind because that's something that contributes to their long and healthy lives. So yeah, I'm very happy to be here, and Christmas and New Year is a time of celebration, but it's also a time to give back, and I can't think of a better way to give back and to be associated with Yoda and Just Dogs as well. So I'm really happy to be here. Thank you. So we have a check of food supply. Would you want to give it? Ananya would love to give it Yes. to Yoda. Yeah. So I was just like big cheese. yeah. Who's never done that before? Mitu, we'll open the questions first. We'll open the questions first. Okay. Yes, please. ओके अनन्या जी, स्वागत है आपका ड्रूल्स में। Thank साइलेंस you. प्लीज। सो पेट लवर्स, कितनी बड़ी पेट लवर है आप, बहन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे पास 2 कुत्ते भी हैं, पर मुझे कुत्ते बिल्ली सारे पेट्स पसंद है। जब मैं छोटी थी, आई रिमेम्बर जब फ्लड्स होते थे, हम जो बिल्डिंग में बिल्लियाँ हैं, हम उनको रेस्क्यू करते थे और खाना खिलाते थे। और जब चिड़िया उनको चोट लगती थी और हमारे बालकनियाँ में गिर जाते थे, वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम टिल दे वर हेल्दी इनफ टू फ्लाई बैक। सो ये प्यार एनिमल्स के साथ हमेशा रहा है मेरे लिए। अडॉप्शन में कितना बिलीव करती है? as they say, adopt, don't shop, and it's very very important. हमारे बिल्डिंग में हमारे पास एक we have a dog called Tara, and सारे बिल्डिंग के लोग ने उनको साथ में अडॉप्ट किया है, and we all take turns in taking care of her and taking her for walks and feeding her. Yeah, she's very cute. ओके, आज यहाँ पे प्रेजेंट है आप, कितना कुछ टाइम बिताने वाली हैं पेट्स के I'm waiting, मुझे जाके देखना है। मैंने सुना है बहुत क्यूट है। Yeah. अनन्या जी, जैसे कि अभी भी मुंबई की गलियों में लावारिस कुत्ते रहते जो घूमते रहते जिसको कोई नहीं पूछता, उसके लिए क्या कुछ इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए? I mean, I'm not fully aware कि अगर कोई laws है या कुछ in place, so I don't know if I'm equipped to talk about that. But जैसे Just Dogs काम कर रहा है with a reflective collar, I think as citizens we can do our best to take care of them. हम उन्हें खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे set पे जब their dogs near the vans, we all make an effort to give them food and water. So I think as citizens we can contribute as much as possible. I would want to add a point. Like, of course, सरकार बहुत कुछ कर रही है. Like, there's been Supreme Court ruling about supporting feeders. जो लोग कितने ही स्ट्रीट डॉग्स को या कम्युनिटी डॉग्स को जो खाना खिलाते हैं ड्यूरिंग कोविड, उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स हुई, काफी लोगों ने उनको धुतकारा एंड एवरीथिंग, एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई है. देयर इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अगेंस्ट क्रूरटी टुवर्ड्स दीज एनिमल्स. ड्यूरिंग दिवाली हम उनकी पूंछ पे या पैर पे पटाखे लगा देते हैं. अब उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है. What as Drools as a company, जो हम 10 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो दर्द हमें होता है वही दर्द उनको भी होता है, जो भूख हमें लगती है, जो प्यास हमें लगती है, वही उनको भी लगती है. जस्ट बिकॉज एज अ इकोसिस्टम हम अपने आप को एक लेवल पे लेके गए हैं. गॉड हैज गिवन अस दैट इंटेलेक्ट एंड दैट पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, then we should all come together and make it count for every single species which is existing on Mother Earth. Thank you. हेलो मैम, आई एम फ्रॉम इंडिया टीवी। क्या मैम, आपको डॉग या कैट दोनों से कौन सा ज्यादा पसंद है? मुझे सारे एनिमल्स पसंद है. मेरे पास 2 कुत्ते हैं, but I really want a cat. पर my parents are a little scared of cats right now. So मैम, 2 साल बाद इंडिया टीवी आपके अलावा को लेकर आ रही है? नहीं, only event related please. Only event related please. Thank you.
Done, guys. आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया। आपकी नए साल में कुछ देखने को मिलेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ ऑफ कोर्स मेरी आई होप मेरी फिल्म ड्रीम गर्ल आने वाली है जुलाई में। हाँ हाँ आई होप सो। तो ड्रीम गर्ल आने वाली है, फिर खो गए हम कहाँ भी आने वाली है, और फिर 3 और प्रोजेक्ट्स जो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो बहुत काम। हाँ आप भी चेक्स और डोनेशन दो तो मैं बताऊंगा। जी मैं सेमीफिनाले के लिए गई थी, पर बहुत मजा आया क्योंकि ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है एंड आई वाज फुली सपोर्टिंग अर्जेंटीना, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं एक फुटबॉल फैन बन चुकी हूँ। एंड अनन्या जी, पेट्स के ऊपर फिल्में बहुत कंटेंट बताने की मैंने आपके भी एक्टर हैं, तो आप लोग चाहेंगे कि ये ऐसे फिल्में बने और आप उस फिल्म का पार्ट बना सकें? Yeah, I hope so. Student of the Year में I remember I had a dog in that film and I had a lot of fun shooting with it. तो yeah, I hope जैसे माली और मी है हॉलीवुड में, तो अगर एक रीमेक ऐसा बने, and I hope that they cast Astro my dog, तो वो भी एक्टर बन सकता है। बट अभी अगर हम बॉलीवुड की ही बात करें, सो ओवर द इयर्स देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पेट काइंड ऑफ मूवीज। सबसे बड़ा एग्जांपल है चार्ली 777, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है बट जिसको इंटरनेशनली बहुत सराहा गया। एंड आई थिंक यू नो एक 5 साल से एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ पेट्स चल रहा है, जहाँ पे पहले जो हमारे जो डॉग्स होते थे या पेट्स होते थे वो घर के बाहर बंधे होते थे, अब वो घर के बाहर सीमित नहीं है, अब वो हमारा बेड लेते हैं और हमें नीचे सोना पड़ता है क्योंकि वो फैल गए हैं। सो there's been a lot of change in the society, and we hope and we pray that people continue to keep loving these beautiful creatures, because जिस तरीके से एक dog और एक cat, for that matter every other tameable species, जिस तरीके से वो हमें प्यार करता है, जो सेल्फलेस प्यार होता है जो हमें उनसे मिलता है, that is a lot of learning for us humans also. So yeah, I hope Bollywood में और ज्यादा फिल्म्स अनन्या करें and हर फिल्म में ड्रूल्स फूड प्रोवाइड करेगा। अनन्या, शाहरुख की पठान मूवी आई है, कितने एक्साइटेड हो आप देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, आप सब एक्साइटेड हो ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। थैंक यू। चेक वाला अंजलि सब चेक के लिए एक्साइटेड है।